Dear students, today we are going to discuss about RNA splicing. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College. We had discussed that eukaryotic genes, they have two types of codes. Those genes which are coding for the synthesis of polypeptides and those genes which are not coding for the polypeptide synthesis, and they were known as exons and introns. तो ये जो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होकर के जो बना था, इसमें अभी कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों प्रेजेंट है। और जो कोडिंग सीक्वेंस है हम उसको क्या कहेंगे? एक्सॉन्स। एक्सॉन्स का मतलब वो जीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए उसको एक्स ऑन कहा है। एक्स ऑन मीन्स इट सिग्निफाइज दैट दे आर एक्सप्रेस्ड. And those which are non-coding sequence, they are known as the introns. So what are these introns? They are the intervening sequence. That is, they denote that they have no role in the synthesis of polypeptides, that is the protein synthesis. These are known as introns. Now we have to understand before splicing that what are the splice site. स्प्लाइस साइट का मतलब वो जगह जहाँ पर कट लगाना है, बिकॉज इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग है उन्हें तो हमें रिमूव करना है और एक्सॉन्स जो है उन्हें वापस से जोड़ना है। तो इसके लिए स्प्लाइस साइट का हमें पता होना चाहिए। एंड वी ऑल नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द 5 प्राइम एंड द 3 प्राइम। 5 प्राइम वो वाला कार्बन है जहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फ्री होता है, और जो 3 प्राइम है वहाँ पर OH ग्रुप फ्री होता है। तो एवरी टाइम अ न्यूक्लियोटाइड विल बी अटैच्ड एट द 3 प्राइम एंड. So the intron which is in the cut which has to be done in front of the intron towards the 5 prime end is known as the 5 prime splice site. इंट्रॉन जिसका 5 प्राइम की तरफ है उसको हम 5 प्राइम स्प्लाइस कहेंगे, और इसी तरह से जो 3 प्राइम की तरफ है डायरेक्शन जहाँ पे कट लगना है उसको हम 3 स्प्लाइस साइट कहेंगे. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल सीक्वेंस in which there will be a cut at the 5 prime site and at the 3 prime site, और ये कट लगने के बाद एक्सॉन्स जो है वो वापस रिकनेक्ट हो जाते हैं. बट दिस is helped by a few proteins which are known as splicosome, and they are actually the small nucleoribonucleoproteins जिसको हम SNRNPs कहेंगे. What are these small nuclear RNAs? These are known as the splicosome, and they are involved in the process of splicing. जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना है उसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने में, यानी स्प्लाइसिंग करने में जो हेल्प कर रहे हैं वो है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस which is known as splicosome. So before understanding about this, let's go through an animated video. Gene results in the formation of pre-mRNA. The pre-mRNA have coding sequence and the non-coding sequence. The coding sequence are known as the exons, while the non-coding sequence are known as the introns. Splicing is a phenomenon in which introns are removed and the exons are joined together to form a mature mRNA. Before understanding how the splicing works, following are the terms that you should know. The part of intron towards the 5' end is known as the 5' splice site. The part of intron towards the 3' end is known as the 3' splice site.
The exon towards the 5' end is known as the 5' exon, and the exon towards the 3' end is known as the 3' exon. The basic mechanism of splicing is simple. The phosphodiester bond between exon and intron at the 5' splice site is first broken, and the 3' hydroxyl group of the 5' exon reacts with the 3' splice site to complete the reaction. Now, depending on the sequence and the way in which splicing occurs, the introns are classified into two types: group 1 introns and group 2 introns. Let's see the splicing mechanism of group 1 introns. The group 1 intron folds itself in such a way that it can hold a guanine nucleotide. The guanine nucleotide is in its ribose form. The 3'OH group of the guanine nucleotide then reacts with the 5' splice site, and the guanine nucleotide finally attaches itself at the 5' end of the intron. This attachment of guanine nucleotide makes the 3'OH end of the 5' exon free. The 3'OH group of the exon then reacts with the 3' splice site. This joins the two exons and releases the intron, completing the splicing reaction. This splicing mechanism is also known as self-splicing mechanism, as no other proteins are involved. Let's say the splicing mechanism of group 2 introns. The splicing of group 2 introns can either occur by self-splicing mechanism or with the help of other proteins and RNA known as the spliceosome complex. Self-splicing of group 2 introns. The group 2 introns have an adenine residue present in its sequence. Remember, the group 1 intron uses a free guanine nucleotide for the reaction, but this is not the case in group 2 intron. It uses adenine, which is present in the sequence itself. The 2'OH group of the adenine reacts with the 5' splice site and forms a loop-like structure known as the lariat. This reaction makes the 3'OH group of the 5' exon free. The 3'OH group of the exon then reacts with the 3' splice site, which releases the intron and completes the splicing mechanism. Now, besides self-splicing mechanism, the splicing of group 2 introns can also be mediated by other proteins and RNA, which is known as the spliceosome. This complex consists of 150 proteins and 5 RNAs known as small nuclear RNA or snRNAs. These 5 snRNAs are designated as U1, U2, U4, U5, and U6. Each of them can be 100 to 300 nucleotides long and are attached to several other proteins. These RNA protein complex is termed as snRNPs or SNRPs, small nuclear ribonuclear proteins, and all of them together carries out splicing reaction. Let's say the splicing mechanism carried out by the spliceosome. In the first step, the snRNP U1 binds the 5' splice site. Next, U2AF, also known as U2 auxiliary factor, binds the 3' splice site. U2AF further helps other protein, known as branch point binding protein, to bind the branch site. The branch point binding protein is further displaced by U2 snRNP at the branch site. When U2 binds the adenine at the branch site, the adenine bulges out. Next, U2AF is released and U2 snRNP further recruits U5, U4, and U6 snRNP. The U6 snRNP tries to occupy U1, hence U1 is released.
The U6 then tries to interact with U2. During this interaction, U4 is released. The interaction between U6 and U2 triggers two reactions. First, there is a formation of loop or the lariat by 5' splice site and the adenine at the branch site. And second, there is a reaction between 5' splice site and 3' splice site, completing the splicing reaction. Now we can clearly understand what are these small nuclear RNAs. What is the role of this small nuclear RNAs? They are involved in the process of splicing of primary transcripts to form mature messenger RNA. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस हैं ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं एंड दीज आर एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो छोटे छोटे प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के बने हुए रहते हैं और ये U1, U2, U3, U4, U5, U6 और U7 इस तरह स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए रहते हैं तो व्हाट वी हैव सीन दैट जो एक्सॉन्स हैं एक्सॉन्स के बीच में जो इंट्रॉन्स हैं वो इंट्रॉन्स जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कंटेन करते हैं दे कैरी द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स सो व्हाट हैपन्स दैट एक्सॉन के बीच में जो इंट्रॉन्स हैं उसको रिमूव करना होता है एंड दिस कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ द इंट्रॉन्स एंड adding these two exons is known as splicing. Now what are these splicosomes? ये जो स्प्लाइसिंग का जो काम हो रहा है ये इट डिपेंड्स अपॉन द इंट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रॉन्स हैं ये उसके बेस पर डिवाइड किया हुआ है द ग्रुप 1 दे कैन स्प्लाइस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोटीन ग्रुप 2 में भी जो है वो स्प्लाइसिंग विदाउट प्रोटीन कर सकता है या विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्लाइसोसोम प्रोटीन स्प्लाइसिंग का काम होगा so what is this spliceosome which is required for the process of splicing it contains 5 ribosomal RNAs जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस हैं उनके बने हुए रहते हैं और वो है U1, U2, U4, U5 एंड U6 तो ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस जो हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर आरएनएस ये 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के होते हैं और कई प्रोटीन्स के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं तो व्हाट वी सी दैट दिस 5 ribosomal RNAs they contain this small nuclear ribonuclear proteins इसको स्नर्प भी कहते हैं इन स्मॉल फॉर्म वी से स्नर्प यानी जो S stands for small, N stands for nuclear, R stands for ribo, N for nuclear and P for protein. ये small letters और capital letter को लेकर के S, N, R, N, P जिसको SNRP कहा कहते हैं So this is the complex spliceosome. Now this will be helping in the process of this group 2 introns. इसमें spliceosome enzyme जो protein complex है उसकी आवश्यकता होती है. It helps. Now in this we can try to understand that how this proteins the spliceosome complex is helping in the process of splicing. तो इसमें आप देखिए कि जो एक्सॉन है एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 इसके बीच में है इंट्रॉन और आपको क्लियरली बताया था जो इंट्रॉन का जो टुवर्ड्स 5 जो एंड है उसको 5 स्प्लाइस साइट कहते हैं जहां पर 5 एंड के ऊपर इंट्रॉन का जो 5 एंड है वहां पर कट होगा और इसी तरह से जो उसका 3 एंड है उसको 3 स्प्लाइस साइट कहेंगे टुवर्ड्स 3 एंड व्हाट इज दिस 5 एंड 3 ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम 5 प्राइम पे कौन सा मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोडाइएस्टर मॉलिक्यूल और जो 3 एंड पर है कौन सा है OH ग्रुप नाउ व्हाट हैपेंस
these proteins U1 and U2, U1 और U2 जो है ये आकर के जो है U1 जो 5 स्प्लाइस साइट है वहां पर फिक्स होगा, और U2 जो है जो ब्रांच साइट है जहां पर बीच में एडेनाइन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है उसको आकर के अटैच होगा। These two small nuclear RNPs SNRP, they attach at the 5 splice site and the adenine nitrogen base which is acting as the branch site. Now next 2 and 3 U4, U6 and U5 ये SNRPs जो है आकर के जो है वो U1 और U2 के साथ अटैच होते हैं, and what they do, they bring the intron को एक लूप की तरह फोल्ड कर देते हैं। By doing this what they do, the axons come near to each other। अब यहाँ पर जो 5 स्प्लाइस पे जो कट लगाया है वहां पर क्या है, क्योंकि now that is the 5 prime end of the intron, तो it is having the phosphodiester bond। This will attach with the OH group of the nitrogen base adenine which is present as the branch site। जो branch site पे adenine nitrogen base है उसके OH group के साथ इसका phosphodiester molecule covalent bonding बना लेगा और वो एक loop बनेगा जिसको हम lariat कहेंगे। Now by doing this एक्सॉन का जो एंड है 3 प्राइम एंड है OH का, that is free to attach with the behind जो पीछे वाला एक्सॉन 2 है उसका जो 5 प्राइम एंड है इसका 3 प्राइम एक्सॉन 1 का और एक्सॉन 2 का 5 प्राइम एंड ये दोनों फिक्स होने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। Now this lariat is removed, the complex is also removed and these two axons will join together। अब ऐसे करने से इंट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं और सिर्फ एक्सॉन बचे हुए हैं, और ये एक्सॉन जो है वो सीक्वेंसेस कंटेन करते हैं जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। नाउ दिस विल बी नोन एज द मैच्योर मैसेंजर आरएनए। So hope it is very clear that how this spliceosome and protein complex is helping in the formation of the lariat loop which will remove the introns and help the axons to bind with each other to produce a mature messenger RNA which will be coding for the protein synthesis, which will contain all the bases which are coding for the protein synthesis। So let us take a quick recap। DNA से बन रहा है messenger RNA, but it is still known as heterogeneous nuclear RNA, that means DNA like RNA, जिसके अंदर एक्सॉन्स भी हैं और इंट्रॉन्स भी हैं। एक्सॉन्स वो सीक्वेंस हैं जो कोड कर रहे हैं एंड दे आर नोन एज द कोडिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन्स जिसके अंदर इंटरवेनिंग जीन्स हैं विच आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो ये जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं इसीलिए हम इसको प्रिमिटिव आरएनए कहेंगे। नाउ दिस हैज एक्सॉन, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, एक्सॉन 1, इंट्रॉन एंड एक्सॉन 2। बीच में आप देखिए जो ब्रांच साइट है जहां पे एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, दिस आर द कटिंग रीजन्स। तो प्रोटीन्स जो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं वो आकर के फिक्स होंगे स्प्लाइस साइट पे और ब्रांच साइट पे, दोनों जो है उसको लूप की तरह फोल्ड करेंगे, एक्सॉन्स नजदीक में आएंगे, द एक्सॉन्स विल बी ब्रॉट नियर टू ईच अदर एंड द रिमेनिंग nucleoproteins, the U3, U4 and U5, they will help to form this lariat, they will remove this lariat,
द लैरिएट इज ऑल्सो रिमूव, दैट इज इंट्रॉन्स भी निकाल दिए जाते हैं, स्प्लाइसोसोम एंजाइम भी रिमूव हो जाता है और दोनों एक्सॉन्स जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं एंड नाउ वी गेट द मैच्योर आरएनए विच इज कंटेनिंग ओनली एक्सॉन, दैट इज ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस. नाउ ट्रांसक्रिप्शन इज डन. ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया है. व्हाट नाउ? नेक्स्ट क्या होगा? नाउ वी हैव मैच्योर मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द सेल्स डीएनए. कोशिका के डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर के पहुंच गया है साइटोप्लाज्म में. इट इज लीविंग द न्यूक्लियस थ्रू अ न्यूक्लियर पोर एंड वंस इन द साइटोप्लाज्म इट फाइंड्स अ राइबोसोम सो दैट ट्रांसलेशन कैन बिगिन. और मैसेंजर आरएनए में कैप और टेल है और दे हैव ओनली एक्सॉन्स. जो 5 प्राइम पे जो कैप है 7 मिथाइल गुआनोसिन, that will act as the signal for the ribosome to recognize it and राइबोसोम जो है उसको पहचान लेगा और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने में उसके साथ बाइंड हो जाएगा. सो व्हाट वी सी दैट this ribosome will start the process of translation. We know how messenger RNA is made, but how do we read the code? मैसेंजर आरएनए कैसे बना ये हमने जान लिया है, बट ये जो सीक्वेंस जो मैसेंजर आरएनए में है उसको रीड कैसे किया जा सकता है, इसको हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड दैट इज द लास्ट एंड ऑफ आवर प्रोटीन सिंथेसिस. द चैप्टर विल एंड बाय द टॉपिक ट्रांसलेशन. थैंक यू सो मच.